Okay, let us start the lecture. In the previous lecture, we have characterized when the two elements of A tensor B are equal, and we have seen that these elements are equal if and only if we have the system of equations, okay, that connects A, B with C, D. Today we will see that that A tensor B with the map tau natural. This is actually the tensor product of A and B over S. So this is our theorem. Let A, it's a bisystem, it belongs to T, E and S, and B belongs to S, E and S, U. Then the pair A tensor B over S with this map tau natural. This is a tensor product of A and B over S, is a tensor product of A and B over S. तो उसके लिए सबसे पहले हमें प्रूव करना है A टेंसर B जो है ना, ये A टेंसर B over S, दिस इज a TU बाई सिस्टम. तो वो मैंने आपको कल रखी थी एक्सरसाइज, वो आपने की होगी. वहाँ पर हमने एक्शन भी डिफाइन किया था, लेफ्ट एज वेल एज राइट एक्शन. सो प्रूफ A tensor B over S is a TU by system, is a TU by system. Clearly this is a by system where the action is defined by, the action is defined by for any A tensor B belongs to A tensor B over S, T in T and U in U. We define T times A tensor B is equal to TA. This is a TA tensor B and A tensor B U. A tensor B, this is equal to A tensor B U. So with respect to these two actions, left and right action, this A tensor B, it becomes a TU by system. It's a TU by system. So next we verify that this tau natural, it's a bimap. Okay, this is a bimap. So this tau natural, okay, is a bimap. तो सबसे पहले ये TU मैप होनी चाहिए. So let's verify that it's a TU map. So let T belongs to T, then T times A tensor B of tau natural. This is equal to this T A tensor B of tau natural. This by definition of the action, left action. But this means tau natural maps each element to its, sorry, it's not it's tau is a map from it's a map from A cross B to A tensor B. Okay,
So we should write here this T times AB of tau natural. Okay, this is equal to TAB of tau natural, and that's by definition it's a class, it's a tensor class. Okay, or tau class of, so let's first write here tau class. Okay, it's tau class of TAB. Definition of the map, this it's tau class, but tau class means that we have denoted by tensor, and this is by definition of left taking, it's T times A tensor B, and again this A tensor B is the tau class of AB. It's a tau class of AB, and that's equal to T times tau class of AB, means the image of AB under tau natural. So T times AB of tau natural is equal to T then AB tau natural. तो फिलहाल तो ये U मैप आ गई, T मैप तो आ गया, अब आपको प्रूव करनी इट्स आल्सो U मैप, U the elements of U on the right hand side. So now let U is in U, then now let U belongs to U, then ABU of tau natural. So first we apply the definition here, the right U action, it's ABU of tau natural, and this is obviously this is the by definition it's a tau class of ABU, tau class of ABU, and that's actually that's a tensor A tensor BU U, and again by definition of action this is A tensor B of U, but A tensor B is the tau class of AB of U, and tau class of AB means AB tau natural of U. So therefore tau natural is a TU map. Therefore tau natural is a TU map. Therefore tau natural is a TU map. अब हमें बाय मैप की प्रॉपर्टी चेक करनी है, मतलब S को मूव कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. Therefore tau natural is a TU map. Therefore tau natural is a TU map. Therefore tau natural is a TU map. Next we show that tau natural is a bimap. अब हम bimap प्रूव करेंगे, तो bimap के लिए let's take element S of S, A of A, B of B. Okay. Then ASB of tau natural, this should be called A comma SB of tau natural, and by definition it's AS tensor B. Okay, it's a tau class of ASB, that's AS tensor B, and this is same as A tensor SB by definition of tau. Okay, by definition of tau, and that's equal to ASB tau natural. So tau natural is a bimap. Tau natural is a bimap. तो अब पहली प्रॉपर्टी तो आ गई इसकी, मतलब tau natural जो है it's a bimap, और ये जो A tensor B और S आपने डिफाइन किया है it is a TU by system. तो अब आपको कोई और TU by system और कोई और bimap आपको लेनी है, फिर आपको प्रूव करना है there exists a map from A tensor B to that TU by system, and that must commute the triangular diagram. Okay, so let's take the any TU by system and any bimap. Let
let C be any TU by system and beta from A cross B to C be any bimap. अब आपको डिफाइन करनी है बी टिल्डा से लेकर डिफाइन define beta tilde. Okay, define beta tilde from A tensor B over S to C by A tensor B. इसके एलिमेंट्स A tensor B टाइप के. अब बीटा टिल्डा द आउटपुट शुड बी इन C. अब हम C अब इसको हम ऐसे डिफाइन किए A B of beta. Now since this AB belongs to A cross B and the image of AB under beta is in C, तो आउटपुट आपका C में होना चाहिए. That's there. So first we verify that this beta tilde it's well defined. Okay, and it's also a TU map. It's a TU map and well defined. Okay, so then we have to show that the triangle commutes. So first we verify that beta tilde is well defined. Beta tilde is well defined. So for this we take two elements of A tensor B and we take them equal, and we need to show that their images are also equal. So let's take two elements A tensor B, C tensor D belongs to A tensor B over S such that they are equal, such that A tensor B is equal to C tensor D, such that A tensor B is equal to C tensor D. So by above theorem there exists A1 A2 up to AN in A and B1 B2 Bn in A and S1 S2 जो हमने थ्योरम की है in S such that A is equal to A1 S1 and B is equal to A1 S1. Okay, B is equal to S1B. Sorry, S1B equal to, okay, S1B is equal to S2B1. Then it's here A1 S2, A1 S2. B में होगी ना? Yes. Oh yes, these B's are in B. You are right. They are in B. Okay. So then A1 S2 is equal to A2 S3. Then we have S3 B1. This is equal to S4 B2. और एक इक्वेशन में लिख दूंगा यहाँ पर. So this is A2 S4. This is equal to A3 S5. Then S5 B2 is equal to S6 B3. और जो लास्ट लाइन जो आपके पास होगी, लास्ट टू लाइन्स में लिख दूंगा यहाँ पर an-1 S2n-2 is equal to an S2n-1, then S2n-1 and bn-1 is equal to S2n bn, and finally we have an S2n is equal to C times S2n plus 1 and S2n plus 1 bn is equal to D. ये हमने कल भी रिजल्ट किया है. So here this system of equations. Now actually we had to show that
बीटा tilde ऑफ ए टेंसर बी इक्वल टू बीटा tilde ऑफ सी टेंसर डी, वो हमें प्रूव करना है। तो विल स्टार्ट विद बीटा tilde of A tensor B. Okay, so beta is a bimap. Okay, beta is a bimap from A cross B to C. इसका ख्याल रखिए, beta is a bimap. So we start with beta tilde of A tensor B, and we'll show that beta tilde of A tensor B is same as beta tilde of C tensor D. So now A tensor B of beta tilde, by definition of beta tilde, it's A B of beta, but this A is equal to A1 S1 B of beta, and this beta is a bimap. इसका वो जो अभी जो आपने इक्वेशन लिखी है, इनका नाम आप 1 रख दीजिए, by 1. ओके, by 1 अभी जो आपने इक्वेशन लिखी है वहाँ पर प्रीवियस पेज पर, दिस इज इक्वल टू A1 S1b of beta, because beta is a bimap. Beta is a bimap. That's equal to A1, and this S1b is S2b1 by equation is 1. By equation is 1. And now again you can apply the property of bimap. It's A1 S2b1, as beta is a bimap, and that's equal to A2 S3 B1 by equation is 1, and this is equal to A2 beta yes beta is there, beta. Okay, A2 S3 B1 beta, as beta is a bimap. So this is equal to A2 S4 B2 by equation is 1, S4 B2 beta. So this is equal to A2 S4 B2 beta by equation is 1. Okay, आप इसको कंटिन्यू कीजिए. अब मैं लास्ट इक्वेशन पर डायरेक्ट आ जाता हूँ. इट्स AN, ओके, S2N BN of beta. This is equal to AN S2N Bn of beta, as beta is a bimap, and this is equal to what's An S2N. This is equal to C times S2N plus 1 Bn beta by equation is 1, and this is equal to C S2N plus 1 Bn of beta, as beta is a bimap, and that's equal to C, this S2N Bn is D of beta. By definition of beta tilde, it's equal to C tensor D of beta tilde. So thus A tensor B of beta tilde is same as C tensor D of beta tilde. Therefore beta tilde is well defined. Okay, so therefore beta tilde is well defined. Okay, so
So next we check its TU map. Beta tilde is TU map. Tensor product definition के लिए ये जो map exist होनी चाहिए. It should be unique and it should be what? It should be TU. Okay, let me see. There should be say that TU map, yes. So next we verify that beta tilde is a TU map. TU map, okay. So this beta tilde, it's a map from A tensor B to C, okay. A tensor B to this C. So let's take element of A tensor B. Let A tensor B belongs to, let A tensor B belongs to A tensor B over S, and T is in T, U is in U. Then we have this A times A tensor B of beta tilde. ये T बाहर आना चाहिए. First we apply the action property of this. It's a T A tensor B of beta tilde. Now we apply the definition of beta tilde. This is T A B of beta by definition of beta tilde, okay. Now again we apply the property of action. It's T times AB of beta. Now beta is a TU map, so ये T बाहर आ जाएगा. T times AB beta, and this is equal to T times, what is this AB beta? This AB beta is equal to A tensor B of beta. So ये T बाहर आ गया. Similarly you can see this Beta U. tilde, sir. Beta tilde, you're right, it's beta tilde here. So similarly A tensor B U of beta tilde, this is equal to A tensor B of beta tilde U. अब हमें प्रूव करना है वो जो ट्रायंगल है ना वो कम्यूट हो रहा है. सो नेक्स्ट वी हैव दिस. नेक्स्ट आपको ये ट्रायंगल एक्चुअली कम्यूट करनी है. दिस इट्स A क्रॉस B to A tensor B over S, and then this is the tau natural map, and this is your beta for C, and this is the beta tilde. You have to prove that tau natural beta tilde is equal to beta. So next we have this. Let's calculate this tau natural beta tilde of AB, okay. This should be equal to AB of beta. First you apply tau natural, it is equal to A tensor B, okay. Tau natural of AB is A tensor B. A tensor B, okay. It's tau class of B, that's A tensor B of beta tilde, but beta tilde of A tensor B is equal to A B of beta. This is true for all A B belongs to A cross B. So thus for any AB belongs to A cross B, tau natural beta tilde of AB is same as AB tau AB of beta. So this gives therefore a tau natural beta tilde is equal to beta, and hence the diagram of इसका नाम वन रख दिया, and hence the diagram one commutes, hence the diagram star commutes, hence the diagram star commutes. हमें अब प्रूव करना है कि ये बीटा टिल्डा यूनिक होना चाहिए विद दिस प्रॉपर्टी, ओके. देयर शुड बी यूनिक मैप एक्चुअली,
hence the diagram star commutes. Hence the diagram star commutes. So hence the diagram star commutes. So finally we show that beta tilde is unique. Finally we show that beta tilde is unique. So let psi be another map from psi from A tensor B over S to C be a TU map, such that the diagram A tensor B over S, this is here this is tau natural, this is beta for C, and we have another map psi such that this diagram commutes. So we show that psi is equal to beta tilde. Okay, we show that psi is equal to beta tilde. That means beta tilde is actually unique. There is only one such map. Okay, so how do we do that? ओके तो अब यहाँ पर जो डोमेन है ना बीटा टिल्ड और साई का, दैट्स ए टेंसर बी. ओके, लेट्स टेक एनी एलिमेंट इन ए टेंसर बी and we show that at every element of A tensor B psi is same as beta tilde. Yes. So let's take any element here in A tensor B belongs to A tensor B over S. Now let's try to see this beta tilde of A tensor B. This is equal to what's this A tensor B actually? It's a tau class of AB. It's a tau class of AB. And what's this tau class of AB? It's actually the image of AB under tau natural beta tilde. Now this is by apply the composition, this is equal to AB of tau natural beta. Okay, but this one tau natural beta, it is it's a beta tilde. Okay, beta tilde, tau natural beta tilde is beta, it's AB of beta. But again this AB of beta is same as tau natural of psi, because this psi is another map which commutes that triangle. Tau natural of psi is equal to beta. Now by apply the composition property, composition of these two maps, it's AB of tau natural, then it applies psi. This is equal to AB tau natural of psi. But tau natural of AB means the tau class of AB, which is A tensor B of psi. So thus A tensor B of beta tilde is same as A tensor B of psi. So thus beta tilde is equal to psi. So there is unique such map. Hence A tensor B. Hence the pair A tensor B and this tau natural
is this is the tensor product of A and B over S. This is the tensor product of A and B over S. और जो भी बाकी टेंसर प्रोडक्ट्स होंगे वो इसके आइसोमॉर्फिक होंगे. And in future we write only this A tensor B over S instead of this pair. So we drop this tau natural. Okay. So in future we write A tensor B over S instead of the pair A tensor B over S comma tau natural. In future we refer A tensor B over S this as the tensor product as the tensor product of A and B over S instead of the pair. Okay. Okay, so this completes the existence part. Uniqueness part हमने पहले किया था, so this was the existence part. तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है दैट्स फ्री प्रोडक्ट्स. फ्री प्रोडक्ट ऑफ सेमी ग्रुप्स. फर्स्ट वी डिफाइन फ्री प्रोडक्ट्स ऑफ सेमी ग्रुप्स. देन इसके बाद हम मोनाइड्स पर आ जाएंगे. पहले सेमी ग्रुप्स का हम देखेंगे. फ्री प्रोडक्ट of semigroups. So given an indexed family of pairwise disjoint semigroups, indexed family, this Si, family Si, I is in the index set I. Given this indexed family of disjoint pairwise disjoint semigroups, pairwise disjoint semigroups, we show we try to form a semigroup F, which we call the free product of the family. We construct a semigroup that we denote by F, और इसकी ये notation भी product then star of Si. I is in the index set I. Okay, this is the notation for that semigroup. It's called the free product, the free product of the family of this family of pairwise disjoint semigroups of the family Si. I is in the index set I. Okay, so now first we use some notations. If A is in the union, suppose union Si, I is in the index set I, then A is in exactly one Si. Okay, because they are disjoint, then there exists unique K in I such that
x belongs to sk, there is a unique key because si's are disjoint, and we call, and this k is called the index of a, and this k is called the index, इसको हम कहेंगे a का इंडेक्स है, ये किस सेमी ग्रुप में है, उसका सबस्क्रिप्ट क्या है, that's called the index. This k is called the index. It's not necessary that this k is integer, okay, or positive integer, it may be anything because I is the indexed family. So in case we have a finite family, then this k can be taken to be a positive integer. So such that x in sk, and k is called the index of a, इसको हम कहेंगे ये a का इंडेक्स है, and we write this k is equal to sigma of a. So sigma of a means the index of a. Sir, is it an x belongs or a, sir? A belongs to union si. A belongs, yes, A belongs to union si, तो एक si में होगा ना ये, because it is in the union. A union में, oh sorry, it's a here, not x, it's a, yes, it's a here, it's a belongs to sk, and this k is called the index of a, and we write this k is equal to sigma of a, sigma of a. तो हम ये f को हमने कंस्ट्रक्ट, अभी तक हमने f को डिफाइन नहीं किया, अब हम f को डिफाइन करेंगे, ओके. तो हाउ डू वी कंस्ट्रक्ट दिस f? नाउ लेट f कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फाइनाइट स्ट्रिंग्स, now let f consists of all finite strings, of this type, okay, a1 a2 an, इस टाइप की स्ट्रिंग्स, और इसमें जो m है ना, दिस am, ओके, m इज ग्रेटर इक्वल टू 1, स्ट्रिंग की लेंथ कम से कम 1 होनी चाहिए, is a positive integer, where these AIs, they are in union si, okay. AI belongs to, or you can write here AR, sorry, not AR. AR belongs to union si, I in the index set I, and this one less or equal to R, less or equal to M. All these AIs, they are in the union. So clearly index of AR is not equal to index of AR plus 1. This is trivial because they must because अगर आपके पास ये string है ना, if the two consecutive letters of this string, they must lie in the different semigroups, not in the same semigroups, and this sigma of AR is not equal to sigma of AR plus 1. Well, R runs from 1 to m minus 1, R is equal to 1 to, मतलब ये जो स्ट्रिंग्स है ना, आपके पास A1 और A2 है, आपके पास सपोज आपके पास ये है, ये सेमी ग्रुप्स है S1 यूनियन S2, आपके पास तो 3 सेमी ग्रुप्स है, फैमिली है 3 सेमी ग्रुप्स, ये डिसजॉइंट फैमिली है, ओके. अब ये जो स्ट्रिंग्स है, इनके जो लेटर्स है A1 A2 AM, दे आर फ्रॉम दिस यूनियन S1 यूनियन S2 यूनियन S3, और इन पर अब कंडीशन ये है कि A1 और A2 जो है ना, जो कंसेक्यूटिव स्ट्रिंग्स लेटर्स है इस स्ट्रिंग की, ये दोनों एक ही सेमी ग्रुप में नहीं है. मतलब A1 अगर S1 में है तो A2 S1 में नहीं होना चाहिए, A2 इट मस्ट बी ईदर इन S2 और इन S3.
तो वही है सिग्मा ऑफ ए आर इज नॉट इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए आर प्लस वन. अब सिग्मा ऑफ ए वन इज नॉट इक्वल टू सिग्मा ऑफ ए टू. सिग्मा ऑफ ए वन है ना, इसका मतलब है इंडेक्स ऑफ ए वन, मतलब सिग्मा ए वन किस सेमी ग्रुप में है, और सिग्मा ऑफ ए आर प्लस वन मतलब है कि ए आर प्लस वन किस सेमी ग्रुप में है. तो डिफरेंट है ये दोनों, दे आर बोथ डिफरेंट. उस सेमी ग्रुप का इंडेक्स क्या है, सिग्मा ऑफ ए आर. ओके, so that means these consecutive letters of this string, they must lie in different semigroups. So this is a conditional, okay, on these strings. And also we say these two strings are equal. If two strings are equal, अगर आपके पास दो strings होगी, also if we have two strings, say a1 a2 am, and second string is b1 b2 bn in f, suppose we have, then we say they are equal, these two strings are equal. If and only if the length of the string must be equal and ai must be equal to bi for all I runs from 1 to up to n. So this is the equality of the string. Next we try to define the product of these two strings, and actually we try to show that this f is a semigroup, okay, and consisting of these strings, all finite strings. So now let's take any two strings, or can take उनको हम words भी कहते हैं, आगे हम उनको words ही कहेंगे, words with alphabets from this union of SI, okay. जो है इंडेक्स, Yes. Yes. हाँ हेलो. Okay, so let's take two strings. Let a equal to and b equals to, so it's am, okay, then b equals b1 b2 bn belongs to f. Then we define the product of a and b, the product of a and b in s by in f by, right, ab is equal to देखिए अब यहाँ पर इश्यू है कि आपको एक्चुअली स्ट्रिंग्स को क्लब करना है. प्रोडक्ट आपको ऐसे डिफाइन करें, यू हैव टू जस्ट क्लब दीज टू स्ट्रिंग्स, आपको एक ही सिंगल स्ट्रिंग बनाना है, मगर उसमें प्रॉब्लम है, आप यू कैन नॉट ऑलवेज डू दैट, क्योंकि स्ट्रिंग्स की कंडीशन ये है कि जो भी कंसेक्यूटिव दो लेटर्स है दे मस्ट कम फ्रॉम डिफरेंट सेमी ग्रुप्स, देयर इंडेक्स मस्ट बी डिफरेंट, ओके. तो अगर मैं इनको सीधा क्लब करूंगा, मतलब a1 a2 am, देन आई राइट b1 b2 b. अब मसला ये कि क्या am और b1 ये डिफरेंट सेमी ग्रुप्स में है, तो अगर ये एक ही सेमी ग्रुप में है देन आई विल जस्ट टेक द प्रोडक्ट, ये मैं एक ही लेटर बनाऊंगा ए एम बी. अगर ये डिफरेंट सेमी ग्रुप्स में है तो उस केस में मुझे सिर्फ क्लब करनी है इन दो स्ट्रिंग्स को. सो आई राइट लाइक दिस, इट्स ए बी इज इक्वल टू a1 a2 an, then b1, sorry it said am here, b1 b2 bn, if ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों डिफरेंट सेमी ग्रुप्स में होगी. दैट मीन्स द सिग्नेचर ऑफ ए एम इज दिस इंडेक्स ऑफ ए एम इज नॉट इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ बी वन, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए.
तो अब ये ओबियसली इट्स नाउ स्ट्रिंग इन एफ, क्योंकि ये एफ की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। ये सारे एलिमेंट्स एसआई से हैं और कोई भी दो कंसेक्टिव लेटर्स जो है वो डिफरेंट सेमी ग्रुप्स में है। प्रॉब्लम यहाँ पर थी, वहाँ पर मैंने ये कंडीशन लगा दी। अगर ये डिफरेंट होगी देन वी डू लाइक दिस, और अगर ये इक्वल होगी उस केस में क्या करेंगे, a1 a2 am-1। अब इसके बाद bam और b1 एक ही सेमी ग्रुप में है, ये दोनों एक ही सेमी ग्रुप, तो वी कैन टेक द प्रोडक्ट bm, sorry it's here am b1 am b1, okay, am b1 then b2 bn if their index is same. Okay, this product is obviously well defined, and obviously this output, it is in F, it's in F. So you check the associative property, that's very simple, आपको वहाँ पर different cases लेनी पड़ेगी. So now we show that above product is associative. Now we show that above product is associative. So for this, let's take three elements. Let A equal to A1 A2 AM, B equals to B1 B2 Bn, and C equals to C1 C2 Cr belongs to F. Okay, so we show that ABC is equal to ABC. So first we assume that index of AM is same as index of B1, and index of CR is same as index of Bn is same as index of C1. So case 1, if index of AM is equal to index of B1 and index of Bn is equal to index of C1. Okay, in this case we find out this product A, BC and ABC. So we have this product A, BC. This is A1, A2, AM, and then BC, since index is the same, it's B1, Bn and C1, then C2 Cr. Again the index is same, it's equal to A1 A2 AM minus 1, then AM B1 B2, then we have here Bn minus 1 Bn C1 C2 Cr, and this product A B C, you will see they are both equal actually. This is equal to, the index is same, it's A1 A2 AM minus 1, then AM B1 B2 Bn with this C, C1 C2 Cr. Again the index is same, this is equal to
A1 AM minus 1, okay, then AMB, AMB1, okay, then B2, then there is BN minus 1 and BNC1, C2, CR. So it's same as the above product. So therefore ABC is equal to ABC. Therefore ABC is equal to ABC. बाकी केस आप खुद देखोगे. अगर सपोज फर्स्ट जो प्रोडक्ट आप लोग जैसे AM B1 इनका दोनों का इंडेक्स सेम है और उनका डिफरेंट है, ठीक है, BNC1 का डिफरेंट है, और उसके बाद और एक केस इनका डिफरेंट होगा और उनका सेम होगा, और लास्ट केस जब होगा तो इंडेक्स अगर हर जगह डिफरेंट होगा, और 3 केसेस आपको करने हैं, दैट यू कैन डू. सो केस सेकंड इज केस सेकंड क्या है? व्हाट्स केस सेकंड? केस सेकंड इज इफ index of AM is equal to index of B1 and index of BN is not equal to index of C1. That's case second. ये भी आप खुद करोगे assignment. Case third if अगर यहाँ पर अनइक्वल होगी और वहाँ पर इक्वल है, C1, ओके. सो ये भी असाइनमेंट. और केस फोर्थ आपको चेक करना है, दैट्स इफ सिग्मा AM इज नॉट इक्वल टू सिग्मा B1 एंड सिग्मा BN इज नॉट इक्वल टू सिग्मा C1. ये भी आप ट्राई कीजिए. नहीं पढ़ेंगे. ओके, ठीक है, कोई बात नहीं. अगर हर एक एलिमेंट का ये इंडेक्स सेम होगा और इम्प्लाई. हाँ, कहाँ पर अगर सेम होगा? एलिमेंट होंगे बट वो लॉन्ग टाइम मतलब इंडेक्स सेम होगा हर एक एलिमेंट. हर एक एलिमेंट का स्ट्रिंग में हर एक एलिमेंट का इंडेक्स सेम होगा. नहीं, दो स्ट्रिंग्स में. 2 स्ट्रिंग्स. एक मिनट, आप 2 स्ट्रिंग्स लोगे, आप मुझे बता क्या आप कह रहे हो. ये स्ट्रिंग है एक A1 A2 AM और दूसरी स्ट्रिंग है B1 B2 BN. ये भी एम ही दूंगी क्योंकि मैं बोल रही हूँ सिर्फ दोनों दोनों की AI इंडेक्स ऑफ AI will be equal to index of BL for each i. फॉर ईच आई. अच्छा, यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आप सपोज आपको एक्चुअली इसका एंड का देखना है और इसका जो है ना फर्स्ट लेटर वो आपको चेक करनी है. ये सेम भी हो सकती है जैसे इस, हाँ, जैसे आप कह रहे हो अगर A1 का इंडेक्स सेम होगा B1 जैसे B1 का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपके पास सब सीधे फिर लेंगे A1 B1 हाँ, A2 B2. जैसे आपके पास है ना A1 A2 A3 मैं अब फिक्स ही कर देता हूँ, ठीक है. दूसरा मैं लूँगा B1 B2 B3 से B4, ओके. अब मसला है कि अगर इनका इंडेक्स सेम होगा उस केस में आपको चेक करना. अगर A1 और B1 का इंडेक्स सेम होगा, आपको ये आप प्रोडक्ट आप ऐसे डिफाइन करते A1 A2 A3 सपोज डिफरेंट ही है यहाँ पर, तो B2 B3 B4. अब देखिए अगर A1 और B1 का सेम भी होगा ना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी. आपको सिर्फ जो कंसेक्यूटिव लेटर्स है ना वहाँ पर डिफरेंट होना चाहिए, ओके. तो इस पर कोई कंडीशन नहीं है, इट मे बी सेम और इट मे बी डिफरेंट. सिर्फ जो फर्स्ट स्ट्रिंग है उसकी लास्ट लेटर और जो सेकंड स्ट्रिंग है उसकी फर्स्ट लेटर जो है
वो आपको उस पर आपको कंडीशन देखनी है कि अगर वो इक्वल हो गया अनइक्वल हो गया, अकॉर्डिंगली आपको प्रोडक्ट डिफाइन करना है. सो और कोई क्वेश्चन? ओके, थैंक यू. सर ये एग्जाम हम सोच रहे थे हम सैटरडे को देंगे, सैटरडे को? और वो सिलेबस इसमें बहुत ज्यादा, सर थोड़ा और कम कीजिए.